Hi, a warm greetings to everyone. We are starting with the Accountancy Sample Paper 2025 to 2026 given by CBSE. Here we are going very slow so that those who are not clear with the things should be clear. Okay, let's start with the Accountancy Sample Paper 25 to 26. बहुत धीरे धीरे चलेंगे so that जिसने नहीं भी अच्छे से किया है उसको भी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और जो कुछ एक आधा हम एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं हम वो भी क्लियर कर पाए. ओके, सो पेपर का ओवरव्यू पेपर चेक कर लेते हैं. Our paper is divided into the two parts, part A and part B. Everybody knows part A includes your partnership and the company accounts, and part B includes either the financial statements or computerized accounting. We are be covering with the financial statements only. In part A, question number 1 to 16, and in part 2, question number 27 to 30 are consisting of your 1 mark MCQs. Beyond that, 3 marks each questions are there, 4 marks questions and 6 mark questions. So we are starting with the first question with the part A. Okay. Your first question is, a partner's capital account was credited with rupees 80,000 during the year. हमारा जो अमाउंट क्रेडिट हुआ है वो कब क्रेडिट हुआ? ड्यूरिंग द ईयर स्टार्ट हुआ है. ओके, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबिलिटी फॉर सच अ क्रेडिट. सो उसने पूछा कि कौन सा आपका जो पॉसिबिलिटी हो सकता है क्रेडिट के लिए. चेक करते हैं. ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस क्या है? ड्यूरिंग द ईयर नहीं आता, ओपनिंग में होता है. दैट इज ऑन द क्रेडिट साइड. दैट मीन्स क्रेडिट साइड तो होता है बट ड्यूरिंग द ईयर नहीं होता. Drawings to be put on the debit side of partner's capital account. Losses are to be put on the debit side of capital account, and capital introduced to be credit side. Okay, credit side होता है और introduce कर रहा है, that means fresh capital introduce कर रहा है तो during the year ही करेगा. So that means our correct answer will be capital introduced. Let's check with the or part. In or part, he says fluctuating capital account shows a debit balance. Yes, fluctuating capital account shows a debit balance. Whenever the total of debit side is greater than the credit side, that means the fluctuating capital account shows the debit balance. Reason, losses and drawings can be more than capital balance. Yes, because or like we said, 2 losses on the partner's capital account, 2 drawings on the debit, and the opening balance, buy balance brought down on the credit side of a capital account. So जब भी हमारे losses और drawings, because the losses during the year हुए हैं, partner ने drawings withdraw किया है, वो किसी भी हालत में आपका जो amount है वो capital balance से greater हो सकता है. yes. और जब भी हमारा, that means reason तो true हो गया, और जब भी आपका लॉसेस और ड्रॉइंग्स ग्रेटर होगा, दैट मीन्स जब डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ग्रेटर हो जाएगी आपके क्रेडिट साइड से, दैट मीन्स हमारा जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा? दैट मीन्स आवर बैलेंस विल बी debit balance. So yes, both are true and it's the correct explanation. So our correct answer will be part A. Okay, let's move on to the next question. Question number 2. It says, on 1st July 2024, that means the partnership is being starting in the middle of the year around 1st July and ending on 31st March 2025. Our partnership is of 9 months. A, B, and C entered into a partnership sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. C was guaranteed that his profits will not be less than 60,000 per annum. Again, we have to reduce the guarantee into 9 months because firm 9 months का है, so guarantee भी 9 months पे reduce करेंगे. Deficiency, if any, will be borne by A and B equally. For the year ended March, firm incurred a loss of 1,25,000. Okay, let's reduce. Guarantee will be reduced at 60,000 per annum into 9/12. So अगर हम reduce करेंगे, so our answer will goes to 45,000 per annum for 9 months जो है उसे guarantee मिली है. We have to find out the deficiency. Deficiency निकालने के लिए we have to find out the C share. C's profit is
sorry, loss. The firm incurs a loss. C's loss will be 1,25,000 into C share, which is 2 by 10. That comes out to be 25,000. तो किसी को लॉस नहीं, प्रॉफिट तो मिला नहीं, उल्टा उसे लॉस मिल गया है 25,000 का। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 25,000 का लॉस कॉम्पनसेट करेंगे। दैट मीन्स वी हैव टू प्रोवाइड हिम द 25,000 प्रॉफिट्स प्लस जो हमने उसे गारंटी प्रॉमिस किया था 45,000 का। सो टोटल 70,000 का जो कॉम्पनसेशन है सी को देंगे। जो डेफिशिएंसी है वो बॉर्न करेंगे कौन, ए एंड बी in their profit sharing ratio, which is, sorry, not in the profit sharing ratio, equally, which is given. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कब करते हैं वो बेयर, जब हमें नहीं पता होता कि डेफिशिएंसी किस रेशियो में बेयर करेंगे। अभी बताया है कि डेफिशिएंसी इक्वली बेयर करेंगे। सो 70,000 का जो डेफिशिएंसी हमने कैलकुलेट किया वो ए और बी आपका बेयर करेंगे इक्वली, which is 25, 35,000 and 35,000. So option will be D. Third question. Pali Limited offered 2 lakh shares of 10 each at a premium of 2 per share. Application were received for 1,95,000 shares. That means under subscription of shares. Amount was payable on as application 3 includes rupees 1 premium. Application, which is 3 divided into, we can say it's 1 rupee premium, so 2 plus 1. Allotment is on 6, which is again 5 plus 1, and balance on the first call. So face value will be 10 and premium is, issue price will be 12. So it will be balancing figure 3 rupees is the first and final call amount. Manoj holding 6,000 shares failed to pay allotment money and his shares were forfeited immediately. मनोज के पास कितने शेयर्स थे 6,000 से, एंड उसने क्या नहीं पे किया, अलॉटमेंट नहीं पे किया, एंड ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ द अलॉटमेंट मनी कंपनी ने क्या किया, उसके शेयर्स को फोरफिट कर दिया गया। और फोरफिट करने के बाद ओनली 4,000 शेयर्स जो है उसके री इशू हुए एट 11 पर शेयर। दैट मीन शेयर्स जो री इशू हो रहा है हमारा प्रीमियम पे री इशू हो रहा है, डिस्काउंट पे री इशू नहीं हो रहा। देयर विल बी, हम एंट्री कैसे करते हैं कैपिटल रिजर्व फाइंड आउट करने के लिए, फर्स्ट एंट्री होता है हमारा फोर फीचर, सेकेंड एंट्री होता है हमारा री इशू का एंट्री, और थर्ड एंट्री होता है कैपिटल रिजर्व का एंट्री। जब फर्स्ट एंट्री करते हैं हम फोर फीचर में, विच इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट एंड टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। सो वहां पे जो हमारा टू शेयर फोरफिटेड क्रेडिट होता है दैट इज टू फॉर द पेड अप अमाउंट, जितना भी हमने अभी तक पे किया है। अभी क्वेश्चन में देख के चलें। सो वी आर ओनली टेकिंग अबाउट द फेस वैल्यू बिकॉज आपका, हम लोग प्रीमियम की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। सो प्रीमियम कितना पेड अप है, एप्लीकेशन 2 रुपीज उसने पे किया और अलॉटमेंट उसने पे ही नहीं किया है। सो 2 रुपीज का paid up amount है and there is no discount. So all the paid up amount will be forfeited, which is we transfer to the capital reserve. So 4,000 shares जो उसके reissue हुए into rupees 2, so answer will be 8,000. अगर हम इसका एंट्री करना चाहें तो एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited account, two calls in areas, or those who want to write down to share allotment can write down that as well. कॉल्स इन एरियज उसने क्या नहीं पे किया, उसने अलॉटमेंट नहीं पे किया 6 रुपीज का, विच इज 5 प्लस 1। अब इसमें प्रीमियम है 1 रुपीज का विच इज नॉट पेड। जब प्रीमियम पेड नहीं होता तो हम एंट्री में प्रीमियम भी जो है डेबिट करते हैं, विच इज सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट होगा बिकॉज इट इज नॉट पेड। शेयर्स आर फोरफिटेड, 6,000 के शेयर्स फोरफिट हुए, मल्टीप्लाई 1 रुपी प्रीमियम, व्हाट इज द कॉल्ड अप अमाउंट, फर्स्ट कॉल नहीं किया। कैपिटल जब भी हम डेबिट करते हैं या कब कैपिटल की एंट्री कभी भी करते हैं तो उसमें हम सिर्फ फेस वैल्यू लिखते हैं, नो अदर अमाउंट इज टू बी रिटन, नो प्रीमियम इंक्लूडेड, नो डिस्काउंट इज इंक्लूडेड, ओनली द फेस वैल्यू। सो कॉल्ड अप अमाउंट टिल नाउ फर्स्ट कॉल नहीं किया, 5 प्लस 2 7 calls in arrears including premium, which is 6,000 into 6, which is the allotment amount, and paid up amount is 2.
So multiply by 6,000 because all the shares has been forfeited. 6,000, this amount to be 42,000, 6,000, 6,000 into 12, 12,000 and 36,000. So this is the amount. Now, this forfeited amount 12,000 is for 6,000 shares. लेकिन हमारे forfeit reissue कितने हो रहे हैं? सिर्फ 4,000. So 12,000 amount 6,000 shares के लिए, 4,000 पे reduce करेंगे so 8,000 और minus करने के लिए कुछ है नहीं because share तो discount पे issue नहीं हुआ. So 8,000 minus nil equals to capital reserve amount comes out to be 8,000. Okay, now let's go to the next figure, which is or amount in this question, which says Praful Limited forfeited 15,000 shares of 20 each, on which 8, including 2 rupees premium, was paid. Out of this, Praful Limited forfeited 15,000 shares of 20 each, on which 8 rupees, including 2 premium, was paid. That means 8 rupees, 6 plus 2 premium, and this is the paid amount. So this is the face value. 13,000 शेयर्स जो है वो री इशू हुए हैं 19 पर शेयर पर, दैट मीन्स ₹1 डिस्काउंट ऑन द री इशू. डिटरमिन द अमाउंट ऑफ शेयर फोरफीटेड बैलेंस. तो हमें अमाउंट निकालना है कि शेयर फोरफीटेड बैलेंस का कितना अमाउंट जो है आपका आया. Now this is important to calculate. We don't have to calculate the capital reserve here. We have to calculate the amount of share forfeited balance left. That means पहले forfeiture का entry करेंगे, फिर reissue करेंगे, फिर capital reserve का entry करेंगे. Then after credit minus debit of share forfeited balance जो भी हमारे पास आएगा, we will be included that in the, वो हमें calculate करना है कि share forfeited balance हमारा कितना आया है. So ये question start करते हैं. 15,000 शेयर्स के पहली एंट्री कर लेते हैं. आर एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. हमें अमाउंट नहीं चाहिए तो हम अमाउंट नहीं पुट करेंगे. क्रेडिट करेंगे टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट. टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट में हाउ मच इज द शेयर इज बीइंग फोरफीटेड? 15,000 शेयर्स इनटू द पेड अमाउंट. पेड अमाउंट उसने बहुत क्लियरली बताया है कि 8 रुपीज पेड है इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम. सो विल ओनली बी डूइंग द एंट्री बाय 90,000. क्रेडिट इन शेयर फोरफीटेड अकाउंट 90,000. डेबिट करेंगे शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट, जितना भी शेयर आपका डिस्काउंट पर इशू होगा एज फुली पेड अप. फुली पेड अप क्या है? 20. 19 पर शेयर पे इशू हुआ है, दैट मीन्स ₹1 का डिस्काउंट है. और 13,000 शेयर्स जो है आपके री इशू हो रहे हैं. सो 13,000 इज द क्रेडिट ऑफ द फोरफीचर अकाउंट. अभी तक हमने 90,000 क्रेडिट किया है, डेबिट किया है 13,000. कैपिटल रिजर्व की भी एक एंट्री कर देते हैं. कैपिटल रिजर्व में कितना डेबिट होगा? 13,000 शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं तो 13,000 इंटू 6 78,000 माइनस जो हमारा फोर फीचर है 13,000. सो कितना हुआ? इट विल बी अराउंड 8 minus 3 and 7 minus 1 65,000 आपका कैपिटल रिजर्व वो एंट्री हो गया. शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. अभी क्या होगा? 90,000 हमने फोर फीचर में सबसे पहले क्रेडिट किया, माइनस री इशू के एंट्री में 13,000 क्रेडिट किया, डेबिट किया सॉरी, और कैपिटल रिजर्व में 65,000 डेबिट किया. आफ्टर डिडक्टिंग ऑल वी आर लेफ्ट विद 12,000 in the share forfeited account. So our correct answer will be C part, third question, or part C, 12,000. Okay. Let's start with the question number 4. Pista Limited took over running business of Vista Limited comprising of assets 45 lakh and liabilities of 7,50,000. In consideration, issued them 30,000 9% debentures of 100 each at a 5% discount or check 10 lakh. We have to determine the amount of goodwill or the capital reserve. Let's quickly do the first entry, which is Sandrya assets. Account debit 45 lakh and two liabilities account 7,50,000. So how much is the liability due to Vista Limited, which is our vendor? 45 lakh minus 7,50,000. Let's subtract. It will be roughly amount to 45 lakhs minus 7,50,000. 37,50,000 is the liability of Vista Limited. So what we are issuing? Vista Limited 37,50,000
2. How much is the debentures? 9% debentures coming out to be 30 lakhs. Debit करेंगे. Loss on issue, which is 1 lakh 50,000. And we are paying him to bank 10 lakh. Let's calculate. Where is the amount? Is it? Credit side is 40 lakhs, and on the debit side it is 38, 5, 10, 3, 8, 9, 39 lakhs. So around 1 lakh is on the debit side, is left. So goodwill, debit side mein aaya to goodwill. So goodwill is around 1 lakh rupees is left. So our correct answer will be part C, which is goodwill 1 lakh rupees. Or part Dawn Limited purchased equipment and paid 2,20,000 by check and issued 16,000 equity shares of 10 each at 25% premium. The purchase consideration will, that means how much is Dawn Limited to pay? Dawn Limited is our vendor, it should be debited. Dawn Limited purchased equipment and paid rupees 2 lakh. Dawn Limited is not a vendor, he is buying the equipment, so we have to pay to someone. And what he is paying? He is paying 2,20,000 by check, that is the paid amount, 16,000 shares of rupees 10 each, issued at 25% premium. So 16,000 into 10 comes out to be 1,60,000, 25% premium. 10 into 25%, that means 1,60,000 into 25%, 1 by 4, it will be 40,000. So how much the purchase consideration he is paying? He is paying a purchase consideration of 4,20,000. So correct answer will be paying, clubbing all the amount is coming out to be answer B, which is 4,20,000. Okay. Next, move to the next question. Question number 5. Bala and Lala are the partners sharing profits in a firm with capital of 24 lakh and 16 lakh. They admit Mala as a new partner for one. Bala and Lala were a partner sharing in a firm with capitals of 24 lakh and 16 lakh. They admit Mala as a new partner for 1 by 3 share, for which Mala brings 20 lakhs as capital. There were investment of rupees and investment fluctuation reserve. Investment is 2,50,000 and investment fluctuation reserve is of 50,000. Bala took over 40% investment at 80,000. So 40% investment is comes out to be 1 lakh. That is taking over at 80,000. That means 20,000 का जो है यहाँ पे लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट टेकिंग ओवर पे, और जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट थी, रिमेनिंग इज 1,50,000, वो उसने टेक ओवर कर लिया एट 1,10,000. दैट मीन्स 40,000 का लॉस उसे यहाँ भी हो गया. By what amount revaluation account will be affected for the above information? Revaluation account में कितना डेबिट करेंगे? So we need to understand one thing. जब भी investment fluctuation reserve दिया रहता है, first of all हम investment fluctuation reserve को use करते हैं to adjust any losses on the investment. So here we have calculated कि investment पे जो है 60,000 का loss हुआ है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 50,000 का. सो 60,000 में से 50,000 तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ही आपका कंट्रीब्यूट करेगा. सो जो रिमेनिंग लॉसेस इन 10,000 रुपीज के, वो कौन एडजस्ट करेगा? आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट. दैट इज टू ऑन द डेबिट साइड बिकॉज वी डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस. तो डेबिट साइड 10,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट. आवर आंसर विल बी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Jay and Viru are investment already कर दिया है. We have to reverse it back. Loss of machinery of the book value 2 lakh by fire. तो 2 लाख का उसने लॉस ऑलरेडी माइनस किया है 2,30,000 के प्रॉफिट से, तो हम 2 लाख का लॉस जो है वो एड बैक करेंगे. अगेंस्ट विच फायर इंश्योरेंस क्लेम 1,50,000 वॉज एडमिटेड, और 1,50,000 का इंश्योरेंस क्लेम भी जो है हमें मिल गया था, तो उसने वो ऐड किया होगा. वी हैव टू माइनस plus abnormal losses minus abnormal gains.
Okay, so our average profit is 2,30,000 plus 2 lakh minus 1,50,000. So that is roughly come out to, not roughly, exactly average is 2,80,000 average profit. Now we need to calculate normal profit. Normal rate तो है but capital employed नहीं है. Capital employed के लिए what he has given our capitals. So capitals में we have to calculate capital of all the partners, which is 10 lakh, 8 lakh, 18 lakhs, reserve 7 lakh, 18 lakh plus 7 lakh is 25 lakhs, and no other thing. Yes. So 25 lakh is our capital employed into normal rate of return 10%. So our normal profit is 25,000. So our average profit is 2,80,000. Normal profit is 2,50,000, which is 10% of 2,50,000. So super profit comes out to be 2,80,000 minus 2,50,000, which is 30,000. और जब capitalize करेंगे super profit को, super profits, which is 30,000 into 100 by normal rate of return 10. So our answer will be 30 lakhs. That is our goodwill. Is it 30 lakhs or 3 lakh? 3 lakhs, sorry. Its answer will be 3 lakh. 30,000 into 100 by 3 comes out to be 3 lakh is the goodwill. So correct answer is 3 lakh goodwill, part B. Next, move to the next question, question number 7. On 1st August 2024, Tom, Jerry, and Tyke entered into a partnership of 5 lakh each capital. Interest on drawing. No, very interesting. The firm is being starting on 1st October 2024. That means August, September, around 8 months. 8 months partnership is there. Interest on drawing was to be charged at the rate of 6% per annum. Interest on drawing was to be charged at the rate of 6% per annum for the year ended 31st March 2025. Tyke withdrew 80,000. Tyke withdrew 80,000. Interest on drawing हमें calculate करना है, which is at the rate of 6%. Now, the important question here is how much the time is to be taken. Normally, when there is no time mentioned, interest on drawing is to be charged for 6 months. But now, here the firm is being starting on 1st August. That means the firm is of 8 months. जब नॉर्मली फर्म 12 मंथ्स का होता है तो हम उसको 6 मंथ्स में रिड्यूस करते हैं. तो जब यहाँ फर्म ही हमारा 8 मंथ्स का है, सो हाँ, हम उसको रिड्यूस करेंगे 4 मंथ्स पे. द 4 मंथ्स our interest will be 1,600. So 1,600 is the rate of interest on drawings. Okay, moving to next question, question number 8. A, B, and C were partners sharing profits and losses in the ratio 7:2:1. B died. B की death हो गई. A took over 120 from his share and remaining share was taken over by C. We have to determine the new profit sharing ratio. So new profit sharing ratio सिर्फ किसका आएगा? A और C, and our formula will be old plus gain ratio. A has a old ratio of 7/10. C has 1/10. Plus gain करेंगे. A took over 1/20 from his share. Clearly from his share. That means no multiplication, nothing. Directly we will be adding back 1/20, which is the gain. And remaining share taken over by C. We have to calculate the remaining. B share was 2/10 minus 1/20 जो A ने gain किया will be the gain for C, which is coming out to be 3/20. ऐड करेंगे 15/20 and 5/20. So coming out to be 15:5, which is reducing to 3:1, simplified form. So our correct answer will be 8. First part D, 3:1. Moving to OR part of question 8.
X, Y, and Z are the partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. Y retired, 3/10 retired, and he gifted half of his share. Y gifted half of his share. Y का share कितना है? 3/10, half, that means 3/20 to X. X gain comes out to be 3/20. And remaining half was taken over by equally. Y has a share of 3/10. Already he given half to X, which is 3/20. Remaining is 3/20. Again, which is divided equally between X and Z, 3/40 and 3/40. So X has the total gain of 3/20 plus 3/40, and Z has the only gain of 3/40. So 9/40 is the gain of A and 3/40 is the gain of C. Z. Now we have to determine the new profit sharing ratio. X has a old profit sharing ratio of 5/10 and Z has an old profit sharing ratio by the formula old plus gain. X has a gain of 9/40. C has a gain of 3/40. Now reducing it to 4, 5, 45. 29/40 and 11/40. So 29 ratio 11. So correct part will be A. Is the 29 ratio 11. Moving on to next, ninth question. X, Y are the X, a partner, was assigned to look after the dissolution process. X को assign किया है कि he will be looking after the dissolution process and was allowed a remuneration of 15,000. X को सिर्फ इतना बोला है कि तू डिसोल्यूशन प्रोसेस को देखेगा और उसको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा 15,000 का, लेकिन उसे ये नहीं बोला गया कि वो अब क्या क्या करेगा, वो उसे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बेयर करने के बारे में नहीं बोला गया है. एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000 आए, जो कि पे कर रहा है अनदर पार्टनर बी. सो बाय व्हाट अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड? रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले बहुत क्लियर है कि हम एक्स का रेम्यूनरेशन देंगे टू एक्स 15,000, और जो वाई रेम्यूनरेशन पे कर रहा है विच इज नॉट अ लायबिलिटी ऑफ एक्स एट ऑल, तो एक्स को नहीं पे करना है, वाई पे कर रहा है, तो वाई को भी कौन कॉम्पनसेट करेगा? फर्म कॉम्पनसेट करेगी विद द एक्चुअल अमाउंट ऑफ 20,000. सो एग्जैक्टली जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो हमारा डेबिट हो जाएगा 35,000 से with the liability of 15,000 as the X remuneration and 20,000 is the actual realization expenses. Question number 10. Okay. Arun and Barun are the partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. They admit Charan into partnership for 20% share, that means 1/5 share. Charan was to bring proportionate capital and he bought rupees 3,50,000 including his share of goodwill in the firm. 3,50,000 लेकर आया, 50,000 गुडविल का है, सो दैट मीन उसका कैपिटल कितना हो गया चरण का? 3,00,000 रुपीज. If adjusted capital of Arun after all, that means सब revaluation profit निकाल लिया आपने, कैपिटल बना के accumulated profit goodwill सब ट्रीट कर दिया, अरुण का शेयर बना 8,40,000. So we need to calculate what was the Barun's capital after revaluation gain or loss. Accumulated ही हमें calculate करना. So we are going reverse. How do we calculate? Here the important is proportionate capital. How do we calculate the adjusted capital of partner Arun and Barun? अभी अरुण का तो उसने बता दिया कि 8,40,000 का हमारा कैपिटल है, वरुण का नहीं पता तो लेट इट बी. हाउ डू वी कैलकुलेट चरण शेयर इन द एडजस्टमेंट? टोटल एडजस्टेड कैपिटल विच इज 8,40,000 प्लस बी into the remaining share of Charan's reciprocal. Charan का शेयर कितना है? 1/5, which is 25%. So remaining कितना हुआ? 4/5. 4/5 का रेसिप्रोकेट करेंगे 5/4 into Charan का जो शेयर है which is 1/5.
5. So ये आपका बनेगा फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ कैपिटल विच इज ऑलरेडी गिवन टू अस 3 lakh after deducting 50,000 of the goodwill. By solving all this, what do we get? 12 lakh minus 8 lakh 40,000. 12 lakh minus 8 lakh 40,000. So our answer will be B. 3 lakh 60,000. जब आप subtract करेंगे, we need to understand here he is mentioning the proportionate capital. So whenever there is a proportionate capital, we have to calculate the adjusted capital of all the partners. Multiply करना है reciprocal of the remaining share of the new partner into the new partner share. Then we come out a point जहां पे आपका new partner का proportionate capital निकलता है. So this is the proportionate capital. We have calculated 3,60,000 is the Barun's capital. Okay, the or part for the question. Raghav and Sahil were the partners sharing profits and losses in 5-3. Their capital balances were 7,20,000 and 2,80,000. There were the balances of general reserve of 5 lakh, deferred revenue expenditure 4 lakh, deferred revenue expenditure loss hoga, general reserve accumulated profit. They admit Ojas into partner for 20% share, which is 1/5, for which he brings 4 lakh as capital. Determine the goodwill share of a Ojas. That means this is the hidden goodwill question that we need to calculate. How do we calculate? First of all, add all the capitals of the partner, including the new incoming partner. So the old partners are 7,20,000 plus 2,80,000. That means 10 lakh is the old partner's capital. Plus करेंगे new partner का capital, which is 4 lakh. 14 lakh plus general reserve, which is 5 lakh, 14 plus 5, 19 lakh, minus करेंगे 4 lakh deferred revenue expenditure. That means again comes out to be 15 lakh as the total capital of the new firm, which is 15 lakh. जो total adjusted capital निकालना है. और जस्ट अब लेकर आया है आपका 4 लाख कैपिटल 20%. तो होना कितना चाहिए था? 4 लाख कैपिटल इंटू 5, विच इज अगेन 1/5 का रेसिप्रोकल 20 lakhs. तो जो एक्स्ट्रा 5 लाख हमारे पास 20 lakh माइनस दिस 15 lakh इज द 5 lakh गुडविल ऑफ द फर्म. But we have to calculate or just share. So 5 lakh into 1/5 because 20% hai, is B, 1 lakh. Hope it's clear. Okay, moving on to the next 11th question. Building was appearing in the books at 20 lakhs, which was overvalued by 25%. मतलब 25% से overvalue करिए, ज्यादा दिखा दिया, कम करनी पड़ेगी हमें. What amount will be in the balance sheet? Balance sheet में कितने का दिखाएंगे? Clear cut 20 लाख का बैलेंस आपका बिल्डिंग है. 25% पे आपका जो है overvalue कर रहा है. That means 100 plus 125 करेंगे तो 125 into 100. After getting it solved, we are getting it at 16 lakhs. Because overvalue कर रहा है 125% पे 100% पे ले आएंगे तो 16 lakhs पे आपका evaluate करेगा, which is B. For question number 12 to 14. 12 to 14 question के लिए we have to read this one hypothetical situation for 12, 13, 14. Floater Limited issued 60,000 8% debentures of 100 each. 5% discount. For these questions are to be simple method is write down always your face value 100, issue price 5% discount, that means 95, redemption price 10% premium, that is 110. That means the total loss on issue we have to 5 rupees on discount and 10 rupees on premium. So total loss on discount is 15 rupees. 15 rupees. On the date of issue, balance in securities premium was 8 lakh and statement of P&L जो already debit है, already loss है, वहां पे 5 लाख रुपए का. Question number 12 says, loss on issue of debenture is to be written as dash out of securities premium. तो securities premium से कितना discount write off करेंगे और statement of P&L से जो है कितना discount आप write off करेंगे. So loss on issue of debentures जो हम write off करेंगे 15 rupees का total loss है into the number of shares 60,000. That means
9 लाख रुपीस का टोटल डिस्काउंट, जिसमें से 8 लाख का तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास ऑलरेडी है, सो वी कैन एडजस्ट 8 लाख आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम और P&L 1 लाख मोर, टोटल 9। सिक्योरिटीज स्टेटमेंट ऑफ P&L तो ऑलरेडी लॉस में है, 1 लाख का लॉस उसमें और चला जाएगा। दैट मीन्स अगर 5 लाख का लॉस है, 1 लाख और डेबिट कर दिया, 6 लाख का लॉस वहां पे आ गया। फॉर 12 क्वेश्चन वी हैव अ करेक्ट आंसर ऑफ C। 13. After writing of loss on issue, dash is the balance in statement of P&L account. डेबिट बैलेंस बिकॉज ऑलरेडी डेबिट था 1 लाख, और हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L में डेबिट किया, अमाउंट हो गया 6 लाख, विच इज आंसर ए। फॉर 14th क्वेश्चन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन द शेयर, premium on redemption will have a balance of dash to be treated as dash in the first year. Premium तो we have already calculated कितना था उसके पास, 6 लाख का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्यों? बिकॉज जो रिडम्पशन है वो सिर्फ 10 रुपए का है, लॉस नहीं है। सो 10 रुपए का जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो 10 है इंटू 60,000 शेयर्स, दैट मीन्स 6 लाख टू बी ट्रीटेड एज नॉन करेंट लाइबिलिटीज। ये क्वेश्चन हमारा पार्ट बी में भी काम आता है, जब वो क्वेश्चन पूछता है व्हाट विल बी द सब हेड एंड मेन हेड, वहां पे भी बहुत काम आएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है हमारा नॉन करंट लाइबिलिटीज होता है अंदर अदर करंट other long-term liabilities. Main head will be non-current liabilities, subhead will be other long-term liabilities, and 6 lakh is the premium on redemption, which is only 10 rupees, not the 5 rupees नहीं लेंगे, because 5 जो आपका डिस्काउंट है, लॉस ऑन इश्यू नहीं। जब लॉस ऑन इश्यू लेते हैं तो प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। Arun, Basu, and Tarun were partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. Their firm was dissolved on March 31, 2025, and following are the assets and liabilities. Building 2 lakh, furniture 80,000, stock 70,000, cash 20,000, creditors 50,000, Arun's loan, Tarun's brother loan. Now we have to take care. बासु और तरुण आर द पार्टनर्स। अरुण का लोन दिया है विच इज पार्टनर्स लोन, और तरुण के ब्रदर का लोन लिया है विच इज अ थर्ड पार्टी लोन, पार्टनर का लोन नहीं है। Okay, what the question is asking from us, डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन गेन और लॉस हमें निकालना है। ओके, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। वेन एवर वी हैव टू मेक द रियलाइजेशन अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट साइड पे ऑल एसेट्स ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट पे ट्रांसफर करेंगे ऑल लाइबिलिटीज। वी आर जस्ट टोटलिंग इट, नॉट राइटिंग इट डाउन बिकॉज एमसीक्यू है। बिल्डिंग एसेट 2 लाख, फर्नीचर 80, 2 लाख 80, 70, 3 लाख 50, गुडविल ट्रांसफर करेंगे 3 लाख 60, डेटर ट्रांसफर करेंगे 4 लाख, कैश ट्रांसफर नहीं करते टू ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश, 4 लाख का हमने एसेट्स ट्रांसफर कर लिया। बाय लाइबिलिटीज ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिटर्स 50,000, अरुण का लोन पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं होगा बिकॉज पार्टनर के लोन का अलग से अकाउंट बनेगा, 50,000, एंड तरुण ब्रदर लोन विच इज 80,000। तरुण का ब्रदर जो है वो थर्ड पार्टी है, इट्स लाइक क्रेडिटर्स ही हम उसको ट्रीट करेंगे। He said assets realized हुए by cash 3,40,000, determine the amount of realization profit or gain. Now we have to understand कि liabilities 80,000 की थी, उसने तो बताया नहीं कि पे हुई या नहीं हुई, तो अगर वो बताए या नहीं बताए, liabilities हमें हमेशा पे ऑफ करनी है। अगर कुछ नहीं बताया तो जो उनका पार वैल्यू है उसी पे हम उसे पे ऑफ करेंगे। नाउ कैलकुलेटिंग, वी आर लिविंग विद द अमाउंट ऑफ 60,000 on credit side, which is a realization profit. So profit of 60,000, which is realization gain, 60,000. Coming to the last MCQ question of this part A. John and Saurabh were the partners sharing profits and losses in the ratio equally. They decided to share future profits 3:2. Their manager Arya met with an accident in the office itself and claim for the compensation of 50,000. And workman have compensation has a 80,000. तो 80,000 का workman compensation है, 50,000 claim किया तो हम दे देंगे, और बचा हुआ 30,000 partners में बांट देंगे in the old profit sharing ratio. Okay, let's say which statement holds true. Part A says 50,000 will be
provided as a workman compensation claim to work out of workman compensation is the correct, and balance 30,000 will be transferred to the partner's profit sharing ratio. Yes, correct. So answer will be आगे जाने की जरूरत नहीं. We have covered all the first 16 MCQ question with the details explanation. So if you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Do follow for the part 2.